Hello. 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 Good morning, students. I hope you can all hear me today. Yes, ma'am. So, today we are going to talk about, I'll just share the slide with you. And today we are going to talk about the various abiotic factors, their importance, and food chain, food web, types of food chains. Let me just scroll down. So, yesterday we were talking about ecosystem, structure and function of ecosystem, food chain, types of food chains, what is food web. Then we'll come down to structure and function of ecosystem. What is stratification, species composition, trophic structure, or levels, as you call them. Okay, so we are going to discuss about the function, and then we are going to go down to producers, consumers, photosynthesis, decomposers, concept of energy flow in ecosystem, principal steps in the operation of ecosystem, flow of energy in ecosystem in the form of cycles, ecological pyramids and their importance. So today's lecture is based will be covering these particular points, and in tomorrow's lecture we are going to talk about ecological succession and types of ecosystems. So just keep a paper and a pen ready with you, because today I'm going to dictate some important points regarding the biotic and abiotic components. Okay. I just have some sore throat, so please cope up with that. So, when we talk about abiotic components, I hope all of you can hear me. When we talk about abiotic components, we were talking about all the non-living parameters, right? So, when we talk about non-living parameters, the first point that came into consideration was energy. The next was temperature, water, atmospheric gases or atmosphere, fire, gravity, etc. So what is their role basically? When we talk about energy, how is it important? I'm going to narrate some key points. I'll provide you notes regarding the same, but please understand this. So when we talk about energy, I hope everyone is following. When we talk about energy, so energy is basically primarily received from sun. Okay, so sun is essential for the maintenance of life. In case of plants, plants directly use sunlight to perform photosynthesis. This is one concept which we have been hearing since our primary classes. So what happens, since animals cannot use solar energy directly, they obtain their energy indirectly from your sun, from your plants or your producers. So what is the key factor when we talk about energy? So energy determines the distribution of organisms in environment. This is the key parameters. Okay, so when we talk about energy, it determines the distribution of organisms in environment. किस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स की कैनोपी डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पीशीज अपने आप को माइग्रेट करती हैं, मूव करती हैं, ये सारा एनर्जी पे डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज वन की पॉइंट. सन से एनर्जी रिसीव करते हैं प्लांट्स एंड ऑल दिस वी ऑलरेडी नो, but this is the key point when we talk about energy. It determines the distribution of organisms in the environment. The next point is water or rain. Okay, and make it as one point. So when we talk about water or rain,
So water is essential for all living beings. Majority of biochemical reactions, जितनी भी आपकी human body में या किसी भी organism की body में biochemical reactions होती हैं, they are usually held in aqueous medium. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स. बॉडी में जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कंडक्ट करने के लिए बॉडी में वाटर इज एसेंशियल. दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. The next important point is water helps you regulate the body temperature. Okay, water helps you regulate the body temperature. दो की फैक्टर्स हैं. और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका तो हैबिटेट ही वाटर है. सो दिस इज व्हाई बायोटिक कंपोनेंट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर इकोसिस्टम. ठीक है, एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ लाइक प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट एंड ऑल, वी ऑल नो इट, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस योर distribution of organisms. Next, when we talk about water, the key factor is biochemical reactions. Chemical reactions and biochemical reactions and regulation of body temperature. Okay, regulation of body temperature. So these are the two factors why water is important. Apart from aquatic animals, जिनका की habitat ही होता है water, so this is one of the reasons. Now, when we talk about temperature, okay, temperature and heat flow. So temperature is a critical factor. Please note it down or listen carefully. Temperature is a critical factor of environment as it helps in conducting all the biochemical reactions at a right temperature. Basically कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो एंजाइम्स हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एंजाइमेटिक फ्लो है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उनको एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. So abiotic factor temperature helps in regulating that cycle. ठीक है, so ये importance है temperature की. So it basically greatly influences your survival on this particular planet. जब भी हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज रीड अबाउट द फैक्टर की जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, दैट इज लीडिंग टू टेम्परेचर राइज एंड इट्स अफेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, तो ये टेम्परेचर का फैक्टर है कि अगर अर्थ वार्म होती है तो इट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर. Okay, next factor is atmosphere or atmospheric gases. So when we talk about atmospheric gases, these gases helps in creating suitable conditions for healthy biosphere or healthy lifestyle. ठीक है, atmospheric gases का अगर एक balance बना रहता है या एक certain percentage में वो gases present रहती हैं, तो plants and animal species के लिए they provide a suitable atmosphere. ठीक है, अगर CO2 ज़्यादा होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है. देन द हीट और द टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस इंक्रीजेस. हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या CO2 का जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जब वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है किसी प्लेस पे, तो वहाँ पे हीट आइलैंड्स बन जाते हैं. ठीक है, बिकॉज एट नाइट when the sun goes down, the heat is not reflected back into the atmosphere. ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है which we have been reading since the early classes. ये फैक्टर है एटमॉस्फेरिक गैसेस का. सो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एंड एनी डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू दीज और देयर परसेंटेज अफेक्ट्स अस फॉर एनी ऑर्गेनिज्म एडवर्सली. सो ये आपका एटमॉस्फेयर का पॉइंट है. अब बात आती है सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स को आप इकट्ठा कंसिडर कर सकते हो, सॉइल, पीएच एंड टोपोग्राफी. सो हाउ आर दे अफेक्टिंग अस or how are they affecting the life? They affect it in such a way that all the nutrients, okay, land is basically a source of nutrients for plants as well as animals. So when we talk about land, we talk about the variety of microbes, protozoa, fungi जो उसमें available है for different kind of animals. कुछ
प्लांट एनिमल स्पीशीज के लिए वो हैबिटेट है, जैसे कि आपका रैबिट है, रैट्स है, ठीक है। बरोइंग एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए सॉइल इज अ हैबिटेट। प्लांट्स के लिए वो एक न्यूट्रिशन का सोर्स है, ठीक है। उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक सुटेबल अमाउंट ऑफ सॉइल विद द राइट पीएच इज इम्पोर्टेंट। तो ये फैक्टर्स है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से एक एक फैक्टर इंटर रिलेटेड है और अफेक्ट करता है आपके सर्वाइवल की। ठीक है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की इम्पोर्टेंस है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आई प्रोवाइड यू एक्सटेंसिव नोट्स ऑन दैट, बट हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द फैक्टर्स। So let's just move forward to the next slide. So when we talk about biotic and abiotic components और वो किस तरीके से रिलेटेड है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था फिश का, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर एक टर्म यूज करी थी मैंने, प्लैंकटन। सो प्लैंकटन्स आर द एनिमल स्पीशीज जो कि अगेंस्ट द करंट प्रोपेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, वाटर करंट फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। एंड दीज आर बेसिकली द फूड फॉर fishes, small fishes and all, they consume these. Okay, you can go through the slide I provided today. So now let's come to the next slide, which is our ecosystem. So yesterday we talked about ecosystem, जिसमें कि दो types के ecosystems हैं। फर्स्ट इज योर नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि हमको जब हम अगर अर्थ को ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो वी विल फाइंड आउट ऑल, विल बी एबल टू फिगर आउट ऑफ सी ऑल दिस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। रनिंग वाटर है, रिवर एंड स्ट्रीम्स है, जिसे लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। लेंटिक वाटर है विच इज योर स्टैंडिंग और पॉन्ड या लेक, ठीक है। तो पॉन्ड या लेक का एग्जांपल रिवर्स वी ऑल नो, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड all the rivers, ठीक है। स्ट्रीम्स, माउंटेन स्ट्रीम्स या कोई भी स्ट्रीम। लेक्टिक में आता है आपका लेक्स। जितनी भी लेक्स आपने कभी अपने लाइफ स्पैन में सुनी होगी, वो उनका एक इकोसिस्टम होता है। इफ यू हैव बीन टू नैनीताल देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वहाँ पे एक सर्टेन टाइप ऑफ फिशेस हैं, एक एक्वाटिक प्लांट लाइफ है। तो वो जो पैरामीटर्स हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट है, दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक पैरामीटर्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म था जो कि एक्सप्लेन नहीं था, वो था आपका एस्चुराइन्स। तो एस्चुराइन इकोसिस्टम कहाँ पे होता है? एस्चुराइन इकोसिस्टम होता है जहाँ पे रिवर और सी मर्ज करता है, ठीक है। तो इस एरिया में बे ऑफ बंगाल इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इस एरिया में मिलने वाली स्पीशीज हैव गॉट अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो दोनों तरह के वाटर्स में, चाहे वो सेलाइन हो चाहे वो रिवर का फ्रेश वाटर हो, उन दोनों में सर्वाइव कर जाते हैं। So we talked about all this yesterday. So let's just move next slide. So when we talk about structure and function, so we talked about the abiotic components. I've already explained them to you. The next is your biotic components. So when we talk about biotic components, so biotic components में आते हैं producers, consumers और decomposers. ठीक है। अब producers और consumers ये सभी और फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दे आर इंटररिलेटेड। सो दिस इज वन ऑफ द इमेजेस व्हिच वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम आवर प्राइमरी क्लासेस। सो ये जो स्ट्रक्चर इमेज है, दिस पर्टिकुलर इमेज इज अ फूड चेन। सो व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन इज अ shows a single pathway from producers to consumers and how the energy flows in this pathway, ठीक है। जब आप प्राइमरी क्लासेस में होंगे तब ये एक सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन किया होगा, बट अभी के लिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एनर्जी फ्लो, हाउ द एनर्जी फ्लोज। ये क्रिटिकल टर्म है एक फूड चेन की। फूड चेन केवल ये नहीं बताता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक कैसे एक स्पीशीज दूसरे को कंज्यूम करती है, but it also determines the energy flow in a particular ecosystem, ठीक है। So this is an example of food chain. So from plants to your primary, secondary and tertiary consumers, then
the dead and decaying is consumed by the decomposers. So when we talk about food chain is divided into three types. अभी तक तो हमने एक सिंगल food chain term सुना था, but now the food chain is divided into three types. The first one is grazing food chain, then the second one is detritus food chain, and the third one is parasitic food chain. ठीक है, so जो grazing food chain है उसका initial point है आपके plants producers, ये याद रखना है या ये क्रिटिकल पॉइंट है. जो डेट्रिटस या सैप्रोफाइटिक फूड चेन है उसका इनिशियल पॉइंट है डेड या डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी फूड चेन का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है. सो ये जो एग्जांपल है प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल था, दिस इज एन एग्जांपल फॉर ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स से स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन, जो डेट्रिटस फूड चेन है उसमें dead organic matter becomes the initial point. ठीक है, the third one is the parasitic food chain. So when we talk about parasitic food chain, तो इसमें जो parasite है that becomes the initial points. जैसे कि parasites आप लोग समझते होंगे, जो nematodes हैं, जो ringworms हैं, या फिर किसी plants पे एक बेल होती है जो जिसे बोलते हैं बेल, समझते हैं that, तो उसको बोलते हैं Cuscuta. Cuscuta is one of the plant parasites. Okay. Please Google or search for Cuscuta dodder. Let me know how it looks like. All of you, please do this exercise. Cuscuta dodder. I'm writing it here on the slide. बताओ किस तरीके का लगता है. Let me just see if you are listening or not. So, अभिनव, अनुराग, चंचल, दीपम, जय, निहारिका, मुस्कान. चलो मुस्कान बताओ how Cuscuta dodder looks like. क्या भाई फोन को लॉगिन करके इधर तक छोड़ देते हो क्या? हेलो, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मान्या एंड हर्षित, आर यू देयर? आ रही है मैम आवाज. ये राजीव, चलो ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर पैरासिटिक फूड चेन्स, देन Cuscuta dodder is one of the examples. Please log in and search for it. ठीक है. So these are the examples for grazing food chain or detritus food chain. So like I talked about your detritus food chain, it means the dead leaves. Okay. When we talk about parasitic food chain, then they start with your parasites या फिर nematodes, जो भी आपका एग्जाम जो नेम है वही सजेस्ट करता है कि आपका फूड चेन किस टाइप का है. The next point is your food webs. So nature में single straight food chains exist नहीं करते हैं. One species is not eaten up or consumed by only one other particular species. एक food web फॉर्म होता है और यू कैन से द एनर्जी फ्लो इज इंटरकनेक्टेड. ठीक है, सो हाउ अ फूड वेब लुक्स लाइक? अ फूड वेब लुक्स लाइक दिस. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें कि डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड और कॉल्ड एज फूड वेब.
So sometimes a single organism gets eaten up by many predators or it's many other organisms. This is when the food chain does not represent the energy flow in a proper manner. Okay. Because there are many trophic levels that interconnect, so a food web comes into place. It shows the interaction between different organisms in an ecosystem. It shows the interactions between, yeah, just got repeated. Okay. So this is how it takes place. Now let's come to the important part of this particular topic, which is the structure and function of ecosystem. तो कोई भी इकोलॉजिस्ट अगर या किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जाता है, मेरीन इकोसिस्टम में जाता है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाता है, so the first task that that person is going to do is figure out the number of species. ठीक है, figuring out the number and type of species. This is what he does. The second thing is stratification. Stratification का क्या मतलब होता है, ये एक important term है और ये याद रहना चाहिए. So stratification means vertical alignment of species in relation to their trophic levels. ठीक है, पहला काम क्या करना है, स्पीशीज का कंपोजिशन करना है. ठीक है, अगर इकोसिस्टम में अगर आपको भेज दिया जाए, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फिगर आउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ स्पीशीज. Secondly, you will do stratification. So what does stratification means? Stratification means vertical alignment of species in relation to their trophic levels. So next question that comes into mind is, what is trophic levels? So trophic levels are, or you can call it as, is arrangement of species in order of their consumption. Okay. Trophic levels is arrangement of species in order of their consumption. तो ये तीन terms हैं जिसमें कि trophic levels या trophic structure और stratification important है. The next term comes is functional group in an ecosystem. So when we talk about functional group, a biological category composed of organisms that mostly perform the same kind of function is called a functional group. ठीक है, तो functional group is ये चार terms हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए. So when we talk about functional group in an ecosystem means एक particular group of species जो कि same type of functions perform करते हैं. जैसे कि plants हैं, तो plants usually perform photosynthesis, तो ये एक functional group है. So this is how you understand a set of species or organisms that perform similar functions is called a functional group in ecosystem. ये चार टर्म्स है, इनको अच्छे से याद करें. अब आती है ट्रोफिक लेवल्स की. तो ट्रोफिक लेवल्स में the feeding levels from producers to consumers, like I already told you, in the order of their consumption. So trophic levels में first level पे आते हैं आपके producers या autotrophs. So these autotrophs, they basically synthesize their own food. We have already read about it. The second trophic level is your herbivores. Okay, herbivores also called as primary consumers. So when we talk about primary consumers की category में आते हैं herbivores. तो ये जो what is producer और first trophic level, primary consumers, secondary consumers, ये concept याद होना चाहिए या clear होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में आपके जो लोअर लेवल के कार्निवोर्स हैं, जैसे कि फॉक्स है, जैकल है, ठीक है, हाउंड्स हैं, या फिर और भी वाइल्ड डॉग्स हैं, बोर्स हैं, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं. बट जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, जो टॉप लेवल कंज्यूमर्स हैं, उसमें आपके टाइगर, लेपर्ड, ईगल, ये
आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं. सो वन शुड बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि टाइगर को आप सेकेंडरी कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट पे लाके या सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे ला सकते हो. नो, दिस इज नॉट हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स. ठीक है, इन रियल प्रैक्टिकल वे जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो हमेशा टॉप लेवल पे रहता है और उसमें एक सर्टेन सेट ऑफ स्पीशीज है. ईगल्स जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स है. So this is how the trophic levels in a particular ecosystem is divided. तो अगर आपको किसी जंगल में जाके खड़ा कर दिया जाए तो this is how you are going to stratify. I'm repeating it again. This is how you are going to stratify the ecosystem. Different trophic levels में divide कर. Okay. Next is function. So when we talk about function, an ecosystem is discrete, structural, functional, life-sustaining environmental system. We all know it. The environmental system consists of biotic and abiotic. We already know. So biotic component include. So basically function ये है किसी ecosystem का function ये है कि वो एक complete unit होती है. एक marine ecosystem एक और उसके abiotic provided, I'm repeating it again, एक ecosystem एक complete functional unit है provided the biotic and the abiotic factors are in balance. Okay? ये आर एन बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म. अगर आप किसी लेक में या किसी पॉन्ड में अगर आप पॉल्यूटेंट्स डाल दोगे तो वो एक कंप्लीट फंक्शनल यूनिट नहीं रहेगी. उसमें से कुछ स्पीशीज खत्म हो जाएंगे या दे विल नॉट परफॉर्म वेल और विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा. सो इफ the biotic and the abiotic components are in balance, then this is a complete functional life sustaining unit. ठीक है, इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन करते हैं. अब आते हैं इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो. ठीक है, जो हमारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है या जो आज का मेन टॉपिक है. लेट मी टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो जब हम बात कर रहे थे ट्रोफिक लेवल्स की, तो ट्रोफिक लेवल्स में वी टॉक्ड अबाउट द three important things. One is your primary consumers या producers. Then producers के बाद आते हैं consumers. Consumers को further divide किया गया है, but for functional purposes और energy flow purposes उनको consumers की category में डाला गया. Classification को यहाँ पे अभी consider नहीं किया. ठीक है. So let's go to the producers, consumers and decomposers. सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं आपके प्लांट्स. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द अर्थ, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी व्हेन इट कंबाइंस विद अदर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म बायोमास. ये समझना है. प्रोड्यूसर है, उसका काम है सन से एनर्जी लेना और उसके बाद उसको सिंथेसाइज करके ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोवाइड करना. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्लूकोज और सोर्स ऑफ एनर्जी, जब आप फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, फ्रूट्स में क्या होती है, फ्रुक्टोज होती है. ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. बट जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है आपका बायोमास. तो एक तो हो गया कि आपने डायरेक्ट ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया या फिर प्लांट मैटर को खा लिया.
दूसरा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है विच इज योर बायोमास. सो व्हाट इज बायोमास? बायोमास इज अ प्लांट और एनिमल मटेरियल यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और heat. For examples, wood, energy crops, waste from forests, yards or farms. तो या तो आप ग्लूकोज के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हो या फिर उसका जो भी प्लांट मैटर बचेगा, लकड़ी बचेगी, उसको आप एज अ बायोमास यूज कर सकते हो. सो प्रोड्यूसर्स का दो काम है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर बायोमास क्रिएट करना जो कि आपको फ्यूल के फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं. सो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? Fossil fuel is basically the degraded or decomposed biomass over the millions of years. तो ये काम होता है प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करना या फिर बायोमास क्रिएट करना. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोमास आ गया. बायोमास की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, प्लीज गो थ्रू इट. और टाइप्स ऑफ बायोमास में वुड, लैंडफिल गैस, अल्कोहल फ्यूल्स, क्रॉप्स, गार्बेज, ये सारा आपका बायोमास में आता है, जिसको कि जलाया जा सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वॉट एवर पर्पस, बट इट एक्ट्स एज अ फ्यूल. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये एक इमेज है, स्ट्रैटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है. यहाँ से लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट डू वी सी अ डेजर्ट स्क्रब. So as we slide down from desert scrub to the tropical rainforest, किसी भी फॉरेस्ट में इस तरीके से स्पीशीज अरेंज्ड होती है. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ग्रास होगी, फिर श्रब्स होंगे, फिर स्मॉलर ट्रीज होंगे एंड देन हाई कैनोपी ट्रीज. तो इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आपने हाइट के अकॉर्डिंग कर लिया है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैटिफिकेशन और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ स्पीशीज. जो हम यहाँ पे we were talking about stratification. Stratification is vertical alignment of species. So the plant stratification किया हमने किसी particular forest में या जंगल में. So this is what we got. ठीक है, relative size of population, stratification of population, distribution of population. तो इस तरीके से height के according आपने stratify कर दिया. Stratify का मतलब aligning themselves according to a certain parameter. Now the next question, the next thing is प्रोड्यूसर्स का क्या काम है? जो ग्लूकोज आपका प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज बी यूज्ड बाय योर ह्यूमन सेल्स और एनी ऑर्गेनिज्म सेल्स. तो एक तो होगी फोटोसिंथेसिस जिसमें कि आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड होता है, अगर हम ग्लूकोज खाते हैं, सो व्हाट हैपेंस? सो दिस इज व्हाट हैपेंस, केमिकल एनर्जी ATP and heat is produced and कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज. तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है इनसाइड अ एनिमल और अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हिच यू शुड बी. नेक्स्ट कम्स योर consumers. So when we talked about primary or the secondary consumers, so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स. ठीक है, सो हर्बीवोर्स में रैट, गोट, डियर, काउ, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. देन आते हैं आपके कार्निवोर्स. ठीक है, तो कार्निवोर्स में सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में जो स्मॉल आपके एनिमल स्पीशीज हैं जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स खाता है, कैट है, स्नेक्स है, फॉक्सेस हैं, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं. And now the last one is your tertiary consumers जो कि secondary consumers को खाते हैं. लायंस, टाइगर्स, ये सारा कैटेगरी, या फिर ईगल खाती है स्नेक को, तो वो टर्शियरी कंज्यूमर का पार्ट है. आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीशीज डिवाइडेड होती है. तो ये कॉन्सेप्ट एकदम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी पिरामिड्स में आपको हेल्प करेगा. ये पिरामिड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स में हेल्प करेगा. नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स का सीधा सीधा काम ये है कि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको सिंपल ऑर्गेनिजम्स में
ये करते हैं, ठीक है। सिंपल कंपाउंड्स में, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक, कंपाउंड्स में ये करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज, the inorganic nutrients together with organic substances are utilized by the producers. Producers में कौन से आते हैं? Plants. ये आपका डिकम्पोजर्स है, उनका सिंपल काम ये है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसे सिंप्लीफाई करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें और प्लांट्स के लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स? माइक्रो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और जो मैक्रो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, माइक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह से विजिबल है या बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ उसका पार्ट है। और जो मैक्रो डिकम्पोजर्स हैं उसमें आपके नेमाटोड्स या अर्थवॉर्म्स आ जाते हैं। ये दोनों सिंपल टर्म्स हैं, इनको याद एज एन एग्जांपल, और ये भी सिंपल। तो ये आपके डिकम्पोजर्स का काम है। प्रोड्यूसर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंज्यूमर्स कितने टाइप्स के हैं वो क्लियर है, नाउ डिकम्पोजर्स भी क्लियर है। माइक्रो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, मैक्रो में आते हैं। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, एनर्जी फ्लो इन द। तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है ऑन दिस प्लैनेट इज योर सन, ठीक है। एंड प्लैनेट्स आर द basic mode or pathway from which the energy is further transferred to different organisms. Primary source आपका हमेशा एनर्जी का सन ही रहेगा। So what happens? The energy from the sun is taken up by the producers and it's transferred to the consumers, then decomposers are inorganic nutrients. Decompose करके inorganic nutrients दोबारा से plants में चलता है। ये साइकिल, फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम साइकिल, दिस पर्टिकुलर साइकिल इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट वर्क्स, लेट्स जस्ट गो बैक टू द पॉइंट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू वेरियस ट्रोफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज नोन एज फ्लो ऑफ एनर्जी। जो फूड चेन के लेवल्स की बात कर रही थी कर रहे थे, तो इट वाज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। हमारा बेसिक एक इकोसिस्टम का फ्लो, एनर्जी फ्लो साइकिल है। Critical point इसमें ये है कि though a lot of sunlight falls on the green plants, only 1% of the photosynthesis, the light is used for photosynthesis, ठीक है। जितनी भी sunlight fall होती है green plants पे, only 1% of it is consumed for photosynthesis. ये important point है। Thus, the energy enters through ecosystem photosynthesis and passes to different trophic levels. This is understood. ये आपका एनर्जी फ्लो का डायग्राम है। ये वन शुड बी वेरी क्लियरली रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी डायग्राम। दोनों में से जो अच्छा लगे उसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। और हर लेवल पे, हर ट्रोफिक लेवल पे, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर्स से डिकम्पोजर्स तक आने में देयर आर 3 टाइप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हर लेवल पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर साइकिल में इट्स ऑलरेडी शोन। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फ्लो ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स आपका सन है, वहां से प्लांट्स 1% ऑफ दैट एनर्जी दे कंज्यूम फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दैट एनर्जी इज फर्दर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स या फिर कंज्यूमर्स से डिकम्पोजर्स तक, ठीक है। ये पर्टिकुलर इमेज इज क्लियर, ठीक है। अब आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स और इनकी क्या जरूरत है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड द प्राइमरी नीड टू डिजाइन एन इकोलॉजिकल पिरामिड वाज टू अंडरस्टैंड हाउ, एक जैसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को बनाने का जरूरत पड़ा। वो इसलिए पड़ा कि अगर आपको किसी अननोन इकोसिस्टम में जाकर के आपको डेटा कलेक्शन के लिए कोड दिया जाए, मान लीजिए कि आपका कोई, आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं या फिर किसी ऐसी साइट पे जाते हैं जो कि पहले एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो हाउ आर यू गोइंग टू, एज एन इकोलॉजिस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर इकोसिस्टम। उसके लिए इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, चार्ल्स डार्विन ने, 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिजाइन किए।
वहाँ पे एग्जिस्टिंग एनर्जी या फिर स्पीशीज को समझने के लिए, उनके नंबर को समझने के लिए 3 तरह के पिरामिड्स हैं। तो वो पिरामिड्स कौन से हैं? Pyramids are pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. So, what was the need for these pyramids? So, basically, these are graphical representations of relationship between organisms at various trophic levels in food chain. ठीक है, ये definition. The basis of ecological pyramid is biomass, energy, and number. So let's just go to the pyramid of number. तो किसी भी, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में पिरामिड ऑफ नंबर लुक्स लाइक दिस। प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स, जैसे कि आपका रैबिट है, काऊ है, ठीक है, या फिर शीप है, कोई भी हर्बीवोर। नेक्स्ट आपका आता है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे कि आपका कैट, फॉक्सेस एक्सेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर, tertiary confusion. Now, why designing this particular pyramid of number is important is a critical question. So, when we talk about pyramid of number, किसी भी इकोसिस्टम में अगर पिरामिड ऑफ नंबर इस तरीके से डिजाइन है, प्लीज लिसन टू दिस। किसी भी इकोसिस्टम में अगर पिरामिड ऑफ नंबर इस तरीके से डिजाइन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे हैव द ब्रॉडेस्ट प्लेटफॉर्म। If the producers have, I'm writing it here, if the producers have the broadest platform, it shows ecological balance. So, अगर आपको कोई डेटा सेट दे दिया जाए और उसमें आपको पिरामिड ऑफ नंबर दे दिया जाए और उसमें 2 इमेजेस शो की जाए, जिसमें कि एक में जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है के लिए और अपर ट्रॉफिक लेवल्स के लिए, अगर वो ब्रॉड है या सबसे ज़्यादा है, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस शो करता है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझना। अब ऐसे तो ड्रॉ करके रख दो कहीं पे भी किसी जंगल में जाके, तो उसका क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है? साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ये है पिरामिड ऑफ नंबर का, जो प्रोड्यूसर्स है अगर वो इस तरीके से इस फॉर्मेट में अरेंज्ड है कि दे होल्ड द ब्रॉडेस्ट प्लेटफॉर्म, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस शो करता है। ठीक है, अगर किसी रैंडम जगह पे जाकर के आपने डेटा सेट कलेक्ट किया और वहाँ पे प्रोड्यूसर्स का नंबर कम है, जैसे कि या फिर प्लांट्स डिप्लीट होते जा रहे हैं किसी कारण से, रेनफॉल नहीं हो रही है, या फिर ए बायोटिक फैक्टर पीएच चेंज हो गया सॉइल का, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो सेकेंडरी और टर्शरी को फूड कंजम्पशन के लिए स्पीशीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंस है पिरामिड ऑफ नंबर का। ये जिस तरीके से इमेज को शो किया गया है, यू कैन राइट इट डाउन, अपने यहाँ हिसाब से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट इसकी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पिरामिड ऑफ नंबर में प्रोड्यूसर्स अगर ब्रॉडेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर बेस पे हैं या लार्जेस्ट नंबर में है, तो इट शोज इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट pyramid, which is your pyramid of biomass. तो बायोमास का मतलब क्या है? The pyramid of biomass. This pyramid represents the amount of biomass of the organisms at each trophic level. ठीक है, biomass is nothing, इसको यहाँ पे इस तरीके से समझना, biomass is nothing but the weight of the organisms। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो, किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बायोमास याद नहीं आ रहा, तो बायोमास इज नथिंग बट द वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ट्रॉफिक लेवल, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एक्वेटिक रीजन्स का या ओशंस का अलग होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर अ टेरेस्ट्रियल रीजन इज ऑलवेज अपराइट। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी।
और ये क्यों है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर टेरेस्ट्रियल रीजन इज अपराइट, अपराइट मतलब ये स्टेटस, बट इन्वर्टेड के केस में इट्स डिफरेंट, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेना, आई एम नॉट डूइंग इट, आई डू इट इन द नोट्स पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली जब हम एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ, तो जो प्लांट्स का इन टोटल वेट है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम है नंबर में यहाँ पे, ठीक है। सो ऑन दो सिमिलर लाइंस जो प्लांट्स हैं उनका वेट भी ज्यादा होगा। किसी भी इकोसिस्टम में हिरन कितने हो सकते हैं, रैबिट्स कितने हो सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेड नंबर, सो दे कम टू द नेक्स्ट लोअर लेवल। देन वी हैव प्राइमरी कार्निवोर्स कि कितने जैकल्स फॉक्सेस हो सकते हैं। ये जो फिगर यहाँ पे दी गई है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेट, दिस इज जस्ट अ schematic representation, please don't get confused with it or otherwise I'll change the image. So basic concept ये है कि जो बायोमास है टेरेस्ट्रियल में plants have the you know maximum weight, then we have the top carnivore which has the lowest weight, ठीक है। जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें ये इन्वर्टेड होता है, जो यहाँ पे जो वेल्स वगैरह है, they have the highest weight whereas the phytoplanktons or these particular compounds they have the lowest weight। इसको मैं इमेज चेंज कर दूंगी, but understand it in this way कि the pyramid of biomass or the aquatic system is inverted, क्योंकि जो phytoplanktons है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, बट इनका वेट अगर आप इकट्ठा करके एक सम वेट या एवरेज वेट निकालोगे दैट इज रिलेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू अ वेल, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड होता है, आई विल पुट अप अ इन्वर्टेड इमेज फॉर दैट। नेक्स्ट आपका आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट like this, and it basically shows how the energy flows from one particular trophic level to another level. So this is an upright pyramid representing the flow of energy from one level to another. When the production is considered in terms of energy, the pyramid indicates not only the energy flow at each level but more important actual role of organisms in ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ये शो करता है। सो ये भी अपराइट होना चाहिए बिकॉज प्रोड्यूसर प्लांट्स आर दी maximum energy producers or they form the basis of your food chain। तो एनर्जी फ्लो के उसमें भी जो पिरामिड है इट शुड बी अपराइट इन इट्स फॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इस पूरे पिरामिड को देखते हुए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है ये, मार्किंग इट इन रेड एंड आई प्रोवाइड यू द सेम। The energy pyramids are always sloping because less energy is transferred from each level than was paid into it by previous trophic level। So यहाँ पे एक रूल आता है which is your Raymond scientist illustrated energy flow and stated that only 10% of the energy is transferred from one trophic level to another. The rest is consumed by the organism for its own metabolic processes, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को समझ लो एंड द पिरामिड ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे रेमंड लिंडमैन, उन्होंने एक
स्टडी किया और ये फिगर आउट किया कि हर ट्रोफिक लेवल पे प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स पे, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स पे एंड टिल द एपेक्स प्रेडेटर या फिर टर्शियरी प्रेडेटर तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो बेसिकली इसका जो बची हुई 90% एनर्जी है हर ट्रॉफिक लेवल से वो कहाँ जाती है? सो जो बची हुई 90% एनर्जी है दैट इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म और स्पीशी फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, अगर ह्यूमन या किसी लेट्स जस्ट से अगर यहाँ पे किसी गोट को रख दिया जाए एट दिस लेवल, ठीक है, या स्नेल्स लिखा हुआ एग्जाम्पल, सो लेट्स जस्ट टेक अ स्नेल. So when a snail takes up energy or it takes up your food or consumes food from the producer, only 10% of that energy is transferred to the next trophic level. बाकी की जो 90% एनर्जी है जो कि स्नेल ने प्लांट से ली होगी वो ये अपने मेटाबॉलिक पर्पस के लिए, अपनी एनर्जी, अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है. So this was defined by a scientist called Raymond Linder. ठीक है, सो ये तीनों आपके पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं in a very short form. So when we talk about pyramid of number, तो pyramid of number शो करता है इकोलॉजिकल बैलेंस. अगर प्लांट्स किसी पिरामिड के बेस पे हैं और वो मैक्सिमम है नंबर में तो इट विल शो इकोलॉजिकल बैलेंस. बिकॉज अगर किसी इकोसिस्टम से प्लांट्स ही चले जाए तो उसके ऊपर के जितने भी ट्रोफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड नहीं मिलेगा. ठीक है, ये पिरामिड ऑफ नंबर का काम है. Pyramid of biomass is basically telling you nothing but the weight of the organisms. इस तरीके से weight distribution एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में. तो टेरेस्ट्रियल का हमेशा अपराइट होता है. टेरेस्ट्रियल मतलब ग्रासलैंड या टेरिटरी, किसी को समझ में आए ग्रासलैंड, ठीक है, या फॉरेस्ट लैंड पे मतलब बेसिकली. ठीक है, एक्वेटिक का हमेशा इन्वर्टेड होता है. रीजन मैंने बता दिया कि फाइटोप्लैंक्टन्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अ व्हेल इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. ठीक है, तो व्हेल का भले ही वेट ज्यादा होगा बट उसका जो नंबर है वो कम होगा. तो इस कंपैरिजन में हमेशा पिरामिड ऑफ बायो एक्वेटिक सिस्टम इज इन्वर्टेड. अब आता है एनर्जी का. एनर्जी में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज स्लोपिंग. And why it's sloping? It's sloping because only 10% of energy is forwarded or given to the next trophic level. इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा स्लोपिंग फॉर्मेट में ही बनता है. अगर इसका एक 3D ग्राफ बनाएंगे डेटा लेके तो हमेशा स्लोपिंग फॉर्मेट में आएगा. आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पिरामिड्स. किसी को डाउट है तो आई विल शेयर द स्लाइड्स टुडे, तो मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके भेज सकते हैं. कल की क्लासेस में या मंडे को वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम along with other topics. So I'll end the class here today. I hope सबको समझ में आया होगा. अटेंडेंस मुझे फॉरवर्ड कर देना. ठीक है, so I'm ending the class now. Okay, have a good day and be safe all.